हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, जो हमारा एनसीईआरटी बैच है 6 से लेकर 12 तक, उसका आज हम लेके आए हैं चैप्टर 5, जो कि ज्योग्राफी क्लास 6 का है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। यदि हमारे किसी फ्रेंड्स ने जो उनका बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है, उनका चैप्टर 1 से लेके 4 तक क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज जाके पहले चैप्टर 1 से लेके 4 तक क्लियर कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर का जो बैकलॉग है वो बढ़ता जाएगा। तो उसका मैं लिंक, अपने चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो प्लीज वहां जाके विजिट कीजिए। और इस जो आज अपना चैनल है और वीडियोज है, उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। क्योंकि जैसे जब भी कोई नया वीडियो आएगी, नई क्लास आएगी, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा उसके द्वारा। और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर करोगे, तो जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को नीड होती है वीडियोस की, जिनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, फ्री में अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस जो वीडियोज है, ये देखने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद, आपको मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे कि अपने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें कितनी लेयर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, कितने ओशियंस होते हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कौन सी कहाँ लोकेशन होती है, कौन सबसे बड़ा होता है। तो हम उसके बारे में पूरा इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शंस। द सरफेस ऑफ द अर्थ is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. चलिए आगे पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लिथोस्फीयर, द solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. जो ये हार्ड एरिया होता है, सॉलिड पोर्शन होता है जहाँ हम रहते हैं, जो अर्थ है जहाँ हम पैर रखते हैं, चलते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसको फिर बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द गैसेस लेयर that surrounded the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर गैसेस लेयर होती है इसमें, अर्थ के चारों ओर, और जिसमें जो गैसेस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस, बहुत सारी गैसेस होती है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। Water cover a very big area of the Earth's surface, and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its form, that is ice, water and water vapors. Next is biosphere. Biosphere क्या होता है? तीनों का कॉमन जो एरिया होता है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contain all form of the life. इन तीनों का कॉमन एरिया जो होता है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। There are two main division of the earth surface. The large landmass are known as continents, and the huge water bodies are called the oceans. पहले हम पढ़ते हैं ओशियंस। All the oceans of the world are connected with one another. जो ओशियंस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनका पानी का लेवल जो है सेम रहता है। The level of sea water remain the same everywhere. Elevation of the land is measured from the level of the sea, which is taken as zero. जैसे कि हम हाइट जो मेजर करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन, रेलवे स्टेशन होती है ना,
वहां पे लिखा होता है कि द हाइट फ्रॉम सी लेवल, तो वो जो एक ही होती है वहां से मानी जाती है। और जैसे हम बोलते हैं कि लद्दाख 19,000 फीट पे है, 19,000 फीट पे है, तो हम उसको जीरो मान के फिर हम उसका मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द हाईएस्ट माउंटेन पीक एट माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स। और कहीं कहीं 50 भी लिखा है, 50 मीटर्स भी लिखा है, क्योंकि इनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। अबव द सी लेवल द ग्रेटेस्ट डिप्थ of 11,022 meters is recorded at the Mariana Trench in the Pacific Oceans। इसका मतलब क्या हो गया, जो अपना माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाईएस्ट हाइट है, माउंटेन पीक है, उससे भी गहरा है, वो कौन सा है? मरीना ट्रेंच। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली यूपीएससी एग्जाम में या वनडे एग्जाम में कि ऐसी कौन सी है जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है, या सबसे गहरी जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? तो मैरिना ट्रेंच हो गया, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। हम कॉन्टिनेंट देखेंगे इसमें, जैसे कि हमारा एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया। ये हो गया कॉन्टिनेंट्स। ओशियंस कौन से हो गए इसमें? पैसिफिक ओशियंस हो गया, अटलांटिक ओशियंस हो गया, आर्कटिक ओशियंस हो गया, सदर्न ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया। हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। कॉन्टिनेंट्स, there are seven major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica। तो हम एक एक नंबर वाइज पढ़ते हैं इसको। एशिया is the largest continent. It is cover about one third of the total land area of Earth. The continent lie in Eastern Hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. This is separated from Europe by the Ural Mountains on the west, and the combined land of the Europe and Asia is called Eurasia. Next, the Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of the Asia. The Arctic circles pass through it. It was bounded by the water bodies on three sides. Next, the Africa is the second largest continent after Asia. The equator, or 0 degree latitude, runs almost through the middle of the continent. A large part of the Africa lies in the northern hemisphere. After Africa is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator, the Tropic of Capricorn pass. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in the Africa. The continent is bounded on all sides by oceans and seas. The world's longest river, the Nile, flows through Africa. ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों निकलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसमें से पास होता है, जो इक्वेटर है वो भी इसमें से पास होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसमें से भी पास होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इक्वेटर पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। नेक्स्ट आता है नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। It is linked the South America by a very narrow strip of the land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern hemisphere, northern and western hemisphere. Three oceans surrounded these continents. Next, the South America lies mostly in the southern hemisphere. The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world
लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। अभी पढ़ते हैं कि जो इस्थमस होता है और स्ट्रेट होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो हम पहले क्या देखते हैं, इस्थमस क्या होता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में होती है। ए नैरो स्ट्रेट स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंडमास, जो दो लैंडमास को ज्वाइन करती है वो इस्थमस बोलती है, कहा जाता है। और स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या बोलते हैं, स्ट्रेट इज ए नैरो passage of water connecting two large water bodies like sea and ocean. Next आता है Australia is called smallest continent that lie directly in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It's called an island continent. Next आता है Antarctica, completely in the southern hemisphere, is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. As it is located in the South Pole region, polar regions, it is permanently covered with thick ice sheet. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there. These are named as a मैत्री एंड भारती। ये हमें वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा अपना रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में है। तो इसका आंसर होगा मैत्री एंड भारती। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट more than because more than 71% of the earth is covered with water and 29% is the land with the land. Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glacier, underground water and water vapors in atmosphere. All comprise the hydrosphere. More than 97 of Earth's water is found in the oceans and it is too salty for human use. A large proportion of the rest of water is in the form of ice sheet and glacier or under the ground, and a very small percentage is available as a fresh water for human use. Hence, dispute being a blue planet, we facing water shortage, facing shortage of water. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओशियंस। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, they are all interconnected. The ocean waters are always moving. The three chief movements of ocean's water are the waves, the tides, and the ocean currents. The five major oceans are the Pacific Oceans, Atlantic Oceans, and Indian Oceans, and the Southern Ocean and the Arctic Oceans in the order of their size. Pacific Oceans is the largest ocean. It is spread over one third of the Earth. Mariana Trench, the deepest part of the Earth, lie in the Pacific Oceans. The Pacific Oceans is almost circular in the shape. Asia, Australia, North and South America surrounded it. Next आता है Atlantic Ocean. Is the second largest ocean in the world. It's, it is as-shaped. It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern sides. The coastal of the Atlantic Ocean is highly indented. These regular and indented coastal lines provide ideal location for the natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. The Indian Ocean.
is the only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost angular. In the north, it is bounded by Asia, in the west by the Africa, and in the east by Australia. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends to northward to 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded the North Pole. It is connected with the Pacific Oceans by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bounded by northern coast of North America and यूरेशिया। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है बेरिंग स्ट्रेट के बारे में कि कौन सा है जो स्पेस पैसिफिक ओशियंस एंड आर्कटिक ओशन के बीच में जो स्ट्रेच ऑफ शेलो वाटर है क्या उसे क्या बोलते हैं, तो बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। तो हम देखते हैं इसमें ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये इसमें जहाज उड़ती है। स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया एंड एक्सोस्फेयर हो गया। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर, जो हमने अभी देखा लास्ट स्लाइड में देखा। जो एटमॉस्फेयर के पार्ट है वो, and अब देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैसेस called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun rays. The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into five layers based on composition, temperature, and other properties. These layers, starting from Earth's surface, are called troposphere, stratosphere, and mesosphere, and thermosphere, and exosphere. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide or argon other comprise 1% by volume. Oxygen is the breath of life, while nitrogen helps in the growing of living organisms. Carbon dioxide through present in minutes amount. It's important us to absorb heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of planet. The density of atmosphere vary with the height. It is maximum at the sea level and decreasing rapidly as we go up. We know the climbers experience problems in breathing due to this decreasing in density of air. They have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe at high altitude. जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे कि हम लद्दाख जाएंगे, लद्दाख से ऊपर जाते हैं, जैसे खरदुंगला पास है, तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, एयर डेंसिटी वो कम है। टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स। तभी हमें पता है कि जो लद्दाख है वो ठंडा है और ये कोल्ड है जब होता है। Atmosphere create pressure on the earth. The various from place to place. Some area experience high pressure and some area low pressure. Air move from high pressure to low pressure. Move air is known as wind. Moving air is known as wind. The biosphere. All the ecosystem of the planet put together from the biosphere. Biosphere क्या होता है? The domain of life. The biosphere is the narrow zone of connected between the land, water, air. It is in the zone that life that is unique to this planet exists. The organism in the biosphere may broadly be divided into the
plant kingdoms, and animal kingdoms. The three dominions of the earth interact with each other and affect each other in same way or the other way. बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पे जो, जैसे कि हमने बताया आपको, जो कॉमन जगह होती है, जैसे कि जहाँ पे एयर भी हो, वाटर भी हो एंड लैंड भी हो, तो तीनों की जो इंटरेक्शन है उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है, जहाँ पे वो यूनिक बनाती है हमारे प्लानिट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स हैं जी, जो ऑनलाइन कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको फ्री में हम कोचिंग लेके आए हैं, जो कि वो पढ़ सके और अपना ड्रीम पूरा कर सके, अपना जो कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का ड्रीम है उसको पूरा कर सके, उसमें हम हेल्प, उनकी हेल्प कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपना चैनल शेयर कीजिए, और आपको चैनल लगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। और यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग या जो पहले 4 चैप्टर है उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। अ, हम आपको आंसर देने पक्का आंसर देंगे। थैंक यू फॉर